Namaskar दोस्तों, good evening. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 644वां 644th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. गोलमाल है, गड़बड़ है और घोटाला है in COVID. Fresh COVID-19 cases have increased twofold in India. Double हो गए हैं within just a week. So be careful. In IIT Madras in Chennai, 18 more students have tested COVID positive, taking the tally up to 78. And in Mathura, the administration has requested all temples to ask devotees to adhere strictly to COVID-19 guidelines. COVID actually बिल्कुल नहीं देखता कि वो मस्जिद में या मंदिर में या गिरजाघर या गुरुद्वारा साहब में है या बाहर है. कोविड का वायरस हर जगह है. In Shanghai, in China, the highest daily toll of COVID deaths has been reported, and China has ramped up its curves, not only in Shanghai, but in other cities like Beijing as well. And now this is something to be mindful of. A study has reported that unvaccinated people increase the COVID-19 risk, not only for themselves, but also for those who are vaccinated. तो अपना टीकाकरण करवाएं, वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को और कंप्लीट करवाएं. And one extra news is that in Haryana, the state government has said that all adults can get free vaccination now. COVID vaccine का जो extra booster है, वो free लगेगा हरियाणा में. With this, let's go to our topic for today. हमारा आज का टॉपिक है diabetes and pregnancy. So, what is diabetes? We all know. What is pregnancy? We know. But how are they linked together, diabetes and pregnancy, and what can we do? इसके लिए हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. उनका नाम है डॉक्टर डीना श्रेष्ठा. मैडम एक बहुत महान हस्ती हैं, बहुत मशहूर हस्ती हैं. She'll join us shortly. She is consultant endocrinologist at Norvik International Hospital in Kathmandu, Nepal, and she is also president of the South Asian Federation of Endocrine Societies. ये 7 countries का जो organization है, उनकी president है मैडम. She also sits on the advisory board of the Indian Journal of Endocrinology, madam also. So we'll wait for her to join. In the meantime, we'll start our topic, our discussion for today. Aruna Tyagi ji हैं, Rajendra Bhandari ji, Dr. Sanjeev Puri, Dr. Vipin Bhandula. Warm welcome everybody. अब बात की जाती है about pregnancy. Now, pregnancy is a window of opportunity. अगर pregnancy ना हो तो दुनिया नहीं चलेगी. Human race will not continue. So it's very important, but it's not just meant for procreation. Pregnancy is actually a window of opportunity, जिसमें आप महिला की, लेडी की, मदर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ में बच्चे की और आने वाली जो पीढ़ी है उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. How do we do that? By something known as pre-conception counseling, then antenatal care and postnatal care. एक एक करके लेते हैं इसको. एंड विमला कपूर जी, स्वप्ना जैन जी को वेलकम करता हूँ. प्री कंसेप्शन केयर मीन्स कि बिफोर प्रेगनेंसी आप महिला की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करें. यू ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ द लेडी सो दैट शी इज फिट टू बियर अ चाइल्ड. एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके यूजुअली 3 हिस्सों में बांटते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर. तीनों हिस्सों में आप ख्याल रखें लेडी का. जो जरूरी टेस्ट हैं, जो जरूरी दवाई है, खाना पीना है, पोषण है, उसका ख्याल रखें. And during delivery, of course, the delivery is taking place. But then postpartum care, don't forget the lady. She needs special care after delivery. So you do that as well. अगर हम इन तीनों चीजों का ख्याल रखते हैं, antenatal, postpartum, and also preconception counseling, we can actually have a healthier lady, a healthier woman, healthier womanhood. But it's not just that. The impact of this care extends to the coming generation as well. तो अगर आप प्री कंसेप्शन केयर, एंटीनेटल केयर अच्छे से करते हैं, डिलीवरी अच्छे से करते हैं, बेबी को भी फायदा होता है. एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट maternal mortality rates and pregnancy losses have reduced markedly. अभी 75 साल हुए हैं हमारी इंडिपेंडेंस को. इतने में विमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डबल हो गई है. maternal mortality जो है, that is delivery death occurring during or immediately after pregnancy, वो 1/10 से भी कम रह गई है. एंड
अब ज्यादा बच्चे सरवाइव करते हैं. So there is an impact. It's a positive impact. But now there is this new concept known as transgenerational karma. Transgeneration karma. इसके बारे में बात करते हैं before going on to our topic. अंशु सिंह जी भी हैं. तो क्वेश्चन है सबको, what does the word कर्म mean to you? संस्कृत का शब्द है. It's a word from Sanskrit. हिंदी में भी यही वर्ड है. Almost all Indian languages, the word is the same. बल्कि इतना important है ये कि इंग्लिश का भी जो वर्ड है कर्मा, that is taken directly from Sanskrit. मैं डिक्शनरी देख रहा था while we wait for your answers. What does the word कर्म mean to you? मैं डिक्शनरी देख रहा था तो उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं संस्कृत से जो चुने गए हैं. और खुद मैं टीटोटलर हूं, बट आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी द वर्ड पंच. सो व्हेन यू गो एंड ऑर्डर अ फ्रूट पंच और एनी अल्कोहलिक मॉकटेल कॉकटेल सॉरी, जिस पे पंच लिखा है, वो पंच वर्ड जो है वो भी संस्कृत से आ रहा है. पंच कम्स फ्रॉम 5. तो क्योंकि उसमें 5 चीजें डलती हैं, वाटर, अल्कोहल, लाइम जूस, स्वीट एंड एनी फ्लेवर, शुगर एंड एनी फ्लेवर. तो इतने सारे संस्कृत वर्ड्स हैं. सो अब कर्म जो वर्ड है, this can be in past tense, it can be the present tense, it can also be future. हम ये कहते हैं कि जो हमने कर्म पहले किए उनका फल हम अब भुगत रहे हैं, उनकी वजह से हमारे आज के कर्म हैं. We can't do much about those now, but जो कर्म अब हम कर रहे हैं ये हमारे कल के कर्म को इन्फ्लुएंस करेंगे. That कल does not mean the next existence only. वो बिलीफ की बात है. मैं बिलीव करता हूं कि मेरी एक और एग्जिस्टेंस भी होगी, मगर जो हमारा कल, परसों, चौथ, आने वाला जो कल है, our tomorrow, day after, in this existence, that is also impacted. And this is the concept of health karam. Suppose today Dr. Sanjeev Puri decides to exercise every day. He decides to eat healthy food. That is his karam in the present tense. Because of that, he will enjoy good karam tomorrow and day after, the next decade, the decade after that. ये इनके फ्यूचर वाले कर्म है, कर्म इन द फ्यूचर टेंस. सो his health is a determinant of his कर्म. ऐसे स्वप्ना जैन जी हैं, उन्होंने पहले डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, माइंडफुल ईटिंग की, उसकी वजह से आज वो एंजॉय कर रही हैं कर्म. शी इज एबल टू लिव हैप्पीली एंड हेल्दीली. तो ये हो गया कर्म. एंड नाउ वी रियलाइज कि जो हेल्थ कर्म है ये तो बहुत सारी चीजों में प्ले कर रहा है. लास्ट ईयर हमने वैक्सीन लगवाई, अब हम अच्छे कर्म भुगत रहे हैं, वी डोंट हैव कोविड. मगर अगर हम बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे, आज हम प्रॉपर कर्म नहीं फॉलो करते, आने वाले कल में गड़बड़ हो सकती है. वी सडनली रियलाइज, जो हमने न्यूज पढ़ी, ये जो कर्म है इसका तो एक दूसरे से भी लिंक है. तो एक्चुअली बुद्धिज्म में, नाउ आई वंडर इफ देयर इज एनीबॉडी लॉग्ड इन हु बिलीव्स इन बुद्धिज्म और हु हैज रेड अबाउट द रिलीजन. बुद्धिज्म में ट्रांसफर ऑफ मेरिट अलाउड है. ट्रांसफर ऑफ मेरिट मींस कि अरुणा त्यागी जी ने अच्छे कर्म किए और उन अच्छे कर्मों का जो फल उनको मिल रहा है, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया राजेंद्र जी को या बिमला जी को या अंशु जी को या मुझे. तो शी इज एबल टू ट्रांसफर दैट. एंड वाइस वर्सा, अगर अंशु जी कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं, दैट कैन गेट ट्रांसफर टू बिमला जी. सो दिस इज अलाउड इन बुद्धिज्म. एंड ये तो अब कोविड में भी दिख रहा है हमें. अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, दैट इज वैक्सीनेटिंग योरसेल्फ, फॉलोइंग सोशल हाइजीन. हाइजीन, आपके आसपास वालों को अच्छा कर्म मिलेंगे, विच इज सेविंग देमसेल्व्स और प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड. अगर आप खुद नहीं कोविड का टीका लगवाते, आसपास वालों को एनकरेज नहीं करते, आसपास वालों के भी कर्म खराब हो जाएंगे. दे माइट succumb to COVID. So first concept was health karam or metabolic karam. Second was transfer of merit, interpersonal karam. But अब प्रेगनेंसी पे आते हैं. प्रेगनेंसी का मुद्दा क्यों? Here we have a term called transgenerational karam, transgenerational karma. अगर मदर अपने 5 नंबरों का ख्याल रखें, ABCDE, 5 चीजों का ख्याल रखें, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी को फीड करवाएं. इससे क्या फायदा होगा? आने वाली जो पीढ़ी है बेबी की, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी. तो ये कौन सी 5 चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं मैटरनल हेल्थ को एंड चाइल्ड हेल्थ को भी, आने वाली पीढ़ी को? दीज आर: A for anemia, B for blood pressure,
C for circumference. Circumference means जो पेट का जो दायरा है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस. एक्चुअली जो हमारे कलीग्स हैं गायनोकोलॉजी में, दे यूज द वर्ड एब्डोमिनल गर्थ. दूसरा तरीका लेने का है वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो ए फॉर अनीमिया, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर सर्कमफ्रेंस और एब्डोमिनल गर्थ और वेट गेन, डी फॉर डायबिटीज एंड ई फॉर एंडोक्राइन. एंडोक्राइन मतलब थायराइड. एक एक करके फिर से लेते हैं इनको. अनीमिया, अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन कम है तो वो बहुत कमजोर होंगी. अगर खुद उनका हीमोग्लोबिन कम है और वो अपने आप का अपनी बॉडी की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रही ऑक्सीजन की, तो बच्चे की कैसे करेंगी? तो बच्चा भी कमजोर निकलेगा. अगर अनीमिया है तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी डिलीवरी में और ज्यादा वीकनेस आती है. तो अनीमिया से एक विशस साइकिल, एक खराब साइकिल स्टार्ट होता है बीमारी का और इल हेल्थ का. मगर अगर हम हीमोग्लोबिन ठीक कर दें, हम आयरन लेते रहें लगातार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हीमोग्लोबिन को ठीक रखें, तो मदर भी स्वस्थ रहती है, बच्चा भी स्वस्थ निकलता है. बी इज फॉर ब्लड प्रेशर. अगर बीपी किसी का बहुत लो हो प्रेगनेंसी में तो भी चक्कर आएंगे, हाई हो तो भी गड़बड़ हो सकती है. जब हाई होता है बीपी तो पैरों में सूजन भी होती है. एंड PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन, ये एक बीमारी आती है. We have with us Gauri Shankar Dharmraji, and good evening, sir. Thank you for being with us. So we are talking of transgenerational karma, how we can encourage women, ladies to take care of their health before, during and after pregnancy. So anemia, blood pressure, इनका ख्याल रखना है. कई बार बीपी हाई होता है और काउंसल भी किया जाता है कि आप अपना ख्याल रखें. अब प्रेगनेंसी में बहुत सेंसिटिव बॉडी हो जाती है, तो अगर आप खूब सारा घी खाएंगे या कांजी पिएंगे या जलजीरा पिएंगे विद लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ सॉल्ट, तो गड़बड़ होती है. सडनली बीपी कैन राइज, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो ख्याल रखना है. C is like we said for circumference or abdominal girth or weight gain. So too much of weight gain in pregnancy, ये भी गड़बड़ की निशानी है. Too little of weight gain in pregnancy, इसमें भी गड़बड़ होती है. So both of these are red flags. And Dharmraji will thank you for being with us. So we'll do both. So today we've been speaking about, or we are going to speak rather about diabetes in pregnancy. We are still in the warm-up phase. We have said that there is this Hindi word or Sanskrit word karma, karam, which is the same in English. And karam can be seen as past tense, present tense, and future tense. If you take good care of yourself, if you follow the right actions, you beget right actions, you beget good outcomes. This is true in the field of health. It is true in the field of interpersonal relationship, and it is also true in pregnancy. So pregnancy, we are thinking of, we have identified 5 things. हम इन 5 चीजों की बात कर रहे हैं. अनीमिया, ब्लड प्रेशर, सर्कमफ्रेंस. इन सर्कमफ्रेंस व्हाट वी हैव सेड इज, अगर आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो या वेट गेन बहुत कम हो, तो दोनों में गड़बड़ है. नाउ द वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश इज रेड फ्लैग. तो जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, your lady doctor during pregnancy, she will keep on checking your weight all the time, and she knows when this red flag comes into being. She will understand weight बहुत बढ़ गया, बहुत घट गया, नहीं बढ़ रहा, something is wrong, let's investigate, let's take care. So that is important. And D is diabetes, what we'll speak about today. And then E is endocrine. In endocrine, the most important number is TSH. TSH थायराइड का टेस्ट होता है. तो प्रेगनेंसी में हम कोशिश करते हैं TSH को कम रखने की. We try to keep TSH below 2.5 in the first trimester and below 3 in the second and third trimester. तो जो नॉर्मल रेंज आपको दिखाई देती है, the normal range that you see written on your lab report, that is not applicable for pregnancy. Similarly, for blood glucose and also for blood pressure, the normal ranges of non-pregnant adults, जिनको प्रेगनेंसी नहीं है वो अलग हैं, प्रेग्नेंट वालों की अलग है. We also welcome Mr. Vijay Kapoor, जो leading industry figure है न्यू दिल्ली से in the field of diabetes care. And now we come to our topic for diabetes today. हमारा टॉपिक है डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी. तो अब इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं.
So we are still waiting for our guest, Dr. Dina Shrestha, काठमांडू से हैं, and I know that there are issues with the internet there. तो अब प्रेगनेंसी इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट. प्रेगनेंसी इज अ डायबिटोजेनिक स्टेट का मतलब है कि प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो ग्लूकोज को बढ़ाते हैं. Such hormones come into being. So such hormones are secreted which increase glucose. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है प्रेगनेंसी में कि ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो ग्लूकोज बढ़ाते हैं? The reason is that there is a state of facilitated anabolism in the period of pregnancy. Facilitated anabolism means कि हम बॉडी को बढ़ाना चाह रहे हैं. We want to increase the size of the body. We want to increase the strength of the body. Why do we want to do that? Lalit Kathuria ji is with us at an age when pregnancy is an important part of life. So welcome Lalit. Pregnancy में कहा जाता है हिंदी में कि आपने 1.5 लोगों का खाना खाना है. It is told to the mother that you have to eat food enough for 1.5 people, for you and for the developing baby. तो इसलिए बॉडी ऐसे हार्मोन्स निकालती है which try to utilize that food. वो खाना यूज भी तो करेंगे ना, we'll use the food. तो इसलिए वेट गेन होता है. ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो एनाबॉलिज्म करते हैं, बॉडी को बनाते हैं, और इनके साथ शुगर भी बढ़ जाती है. बट समटाइम्स इट बिकम्स अ बिट टू मच. अब ये जो ग्लूकोज है ये बहुत ही नाजुक सी चीज है. इंसुलिन भी, दे आर वेरी subtle, very special, very delicate kind of things. And we use the concept of Goldilocks hormones or Goldilocks values. Let me explain what Goldilocks is. Now, most of us would have read this story during childhood. एक Goldilocks थी, छोटी सी प्यारी सी लड़की थी. She went to the jungle. She entered a house. वहाँ पे she sat on the chair. And then she felt the chair is too big. Then she sat on the next chair. That chair was too small. Then she found a third chair. That chair was perfect. फिर उसने देखा उसको भूख लगी, तो फिर उसने दलिए का बोल देखा. She saw a bowl of porridge, but the first bowl was too big, the second was too small, and the third was just right. और फिर वो जाके सो गई, but the first bed was too big, the second was too small, the third was just right. And when she woke up, then she found that she was in a house of bears, and there were 3 bears, one big bear, one small bear, and one middle bear. Now let's look at our day-to-day life. किचन में यू टेक योर मॉर्निंग कप ऑफ टी. अगर बहुत ज्यादा चीनी हो तो भी गड़बड़ है, बहुत कम चीनी हो तो भी गड़बड़ है. बट इफ द शुगर इज जस्ट राइट, देन यू एंजॉय योर कप ऑफ टी. सेम, you have breakfast. Let us say for breakfast we have idli and sambar. If there is too much of salt in the sambar, then we are in trouble. Too little, there's no taste. But if it's just right, that's a perfect start to breakfast, to the day. Now, there are some things where you have to be perfect in the body. That is like glucose level, insulin level. So here, you have to be really perfect, and the body has to take care of itself. ऐसे में disease होने का ज़्यादा chance होता है, and especially in pregnancy, we want glucose values to be just right. We want insulin levels to be just right because we are worried about the baby and also about the mother, and we are focusing on transgenerational karma. We want to do the right karam for this lady during pregnancy. So what do we do? How do we diagnose? How do we manage? The first thing is to suspect. उसके बाद screen. And उसके बाद substantiate the diagnosis of pregnancy, the diagnosis of diabetes in pregnancy. How do we suspect that a lady can have diabetes? Anyone who has had diabetes in the past, any lady who has a positive family history of diabetes, family में किसी को शुगर रही हो, anyone with comorbid conditions, बाकी बीमारियां जो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड हैं, याद रखने के लिए ढोल, DHOLL. So D for diabetes, H for high blood pressure, O for obesity, L for lipids या cholesterol, and L for liver, fatty liver. So anybody जिसमें ढोल के बाकी चीजें हों, HOLL, उसमें D के भी चांस ज्यादा हैं.
any lady who has had a lot of abortions in the past, who has found it difficult to conceive, who has had polycystic ovary syndrome in the past, or who has delivered a baby who was more than 3 kg heavy at birth. तो अगर 3 kg से ज्यादा वजन हो बच्चे का पैदाइश पे, चांसेस हैं कि मदर को थोड़ी बहुत शुगर रही होगी प्रेगनेंसी में. तो ये सब जो हिस्ट्रीज हैं, इसमें चांस ज्यादा होता है डायबिटीज होने का इन प्रेगनेंसी. सो दिस इज व्हेन वी विल सस्पेक्ट. बट एक्चुअली जो सच्ची बात है कि इंडिया में बिकॉज ऑफ आवर एथनिक ग्रुप, आवर मेकअप, एवरीवन इज एट हाई रिस्क ऑफ जीडीएम. जो एवरेज परसेंटेज है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी का, इसको हम कहते हैं जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज. दिस इज अबाउट 15 to 20%. That means 1 out of every 5 or 1 out of every 6 to 7 women will have some amount of diabetes during pregnancy. So we suspect in everybody and therefore we have to screen. Screen का मतलब क्या है कि हम ग्लूकोज चेक करते हैं. एक स्क्रीनिंग होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 12 हफ्ते में. जब भी मरीज आपके पास आए पहली बार ओपीडी में, उसका रीजन ये है कि देयर माइट बी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, सो वी हैव टू रूल दैट आउट. सो वी चेक ग्लूकोज. एंड दूसरी होती है एट अराउंड 20 to 24 वीक्स, राइट इन द मिडल ऑफ प्रेगनेंसी. यहाँ पे हम जरूर एक ग्लूकोज टेस्ट करते हैं. एंड दिस ग्लूकोज टेस्ट इज नोन एज अ जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. अलग अलग तरीके हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के. जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है फास्टिंग. कॉल द पेशेंट फास्टिंग, एक खाली पेट ग्लूकोज चेक करें, 75 ग्राम्स ग्लूकोज पाउडर दें और उसके 2 घंटे के बाद फिर ग्लूकोज चेक करें. अगर आपका मरीज दूर से आ रहा है, द पेशेंट इज कमिंग फ्रॉम फार ऑफ एंड शी कांट कम रेगुलरली, शी कांट कम एवरी डे जस्ट फॉर दिस टेस्ट, शी कांट गेट इट डन एट होम आल्सो, देन यू कैन डू समथिंग कॉल्ड अ डिप्सी टेस्ट. डिप्सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया. दिस वाज क्रिएटेड एंड इज रन बाय डॉक्टर सेशैया from Chennai. DIPSI test ये कहता है that you can do the test any time of the day, whether the patient is fasting or not. You just give 50 grams of glucose and check the plasma glucose after 1 hour. So both the ways of screening are there. You can do a fasting and a 2-hour post challenge, or you can just do a 1-hour post challenge. Normal values अलग हैं प्रेगनेंसी में. And in general, हम कोशिश करते हैं प्रेगनेंसी में that fasting glucose should remain below 95. 1 hour postprandial should remain below 140. And 2 hour postprandial should remain below 120. Postprandial means खाना खाने के बाद. So we have very tight targets in pregnancy. क्यों है? Vaishali ji has also joined us and so has Abir Rajkarne ji. We already explained that glucose and insulin, they are like Goldilocks kind of hormones or Goldilocks chemicals. You have to keep them just right. And Dr. Noor Aga Danish has logged in at just the right time from Afghanistan. So warm welcome, Dr. Noor. Dr. Dharmaraj also raised the point of HbA1c. So we'll just come to that. So you can screen with glucose, post-load or postprandial glucose. And you can also do an HbA1c. HbA1c will help you in monitoring. But HbA1c alone is not a good idea in pregnancy because sugar start hi pregnancy mein hoti hai and HbA1c will take a couple of months to rise. So with HbA1c alone, you will miss a lot of GDM, gestational diabetes. So first, we were going to suspect diabetes in everybody. Then we are going to screen in everybody. And then we substantiate. If you get just one abnormal value, that's not enough. You have to do it again. So you do it again, you do an HbA1c and you substantiate the diagnosis of diabetes. Once you've done that, we come to treatment. So it's not enough just to substantiate, you have to sort out also. And it's not enough just to sort out, you have to supervise your patient. So now let's come to treatment and let's take this question coming from Chennai. Initial HbA1c was 14%. We started on insulin, continued for 6 weeks. And now HbA1c is 7.5. This actually happens. So the guidelines are quiet about this because the guidelines are written by Western authors. They do not see patients with A1C 14, but we see lots.
And it is not that the lab is wrong. Actually, the A1C can come down from 14 to 7.5. This is because earlier the patient didn't know that he has diabetes. Now he knows. Earlier he never followed dietary advice. Now he has followed. He has taken insulin. The glucotoxicity has come down. The lipotoxicity has also come down. Whatever glucose and lipids were roaming around in the blood and were acting as a poison upon the beta cell and upon the insulin receptors, they have vanished. So now things are back to normal. So how do I start OADs? Now, if the patient is very lean and thin, very marasmic, I will request the patient to continue insulin. But if the patient is normal built or in obese or is overweight or obese, I will say, sir, we had been giving you, let us say, premixed insulin 2 times a day. The same way that we change gears during driving, let us do that. So from 2 injections, let me come down to 1 injection. What injection would you like to take? Would you like to take premixed in the morning or premixed with dinner? Or maybe you want to shift to basal once a day. Let us keep you on 1 injection for maybe 2 weeks. Just ensure that the body is able to adjust, and next time I will change. So my commonest initiation is premixed. In such a patient, at 6 weeks, sir, I will go down to 1 dose of premixed, reduce the dose, and in the antipodal meal, that is maybe breakfast premixed and dinner. In dinner, I will give sulfonylurea and metformin, or I will give gliptin and metformin. I'll do that for a week or 10 days. Supposing glucose control worsens, it means we have to go back to insulin twice a day. But if it's okay, then in the next visit after 2 weeks, then I'll give that sulfonylurea metformin or gliptin metformin twice a day. So this is what I do. And we will also check the HbA1c again after 6 to 8 weeks. So feel confident when you are stopping insulin, but don't stop suddenly. And you can teach your patient also. Let us do slowly, slowly. Let us follow the same rules that a careful driver would follow. So this is what we do. In pregnancy, the first line of treatment in gestational diabetes is medical nutrition therapy. So medical nutrition therapy is the first line. You shouldn't make the patient starve, but you can tell her to take a 3+3 meal pattern. 3 major meals, 3 minor meals. Stop refined sugars and reduce ghee, butter, and cream. Increase green vegetables. Now, in 80 to 90% of women, this diet will help. But sometimes you will need medication. So the drug of choice is insulin. Now we understand that everywhere it is not possible to give insulin. So metformin is a drug which is safe. If gestational diabetes is well controlled on metformin and the baby is also growing properly, there is no IUGR, no intrauterine growth retardation. Also, there is no हाइड्रेमनियोस. अल्ट्रासाउंड में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है आपको, पानी भी ठीक है, ना कम है ना ज्यादा है, देन वी कंटिन्यू मेटफॉर्मिन. जो पुरानी गाइडलाइंस हैं साउथ अफ्रीका की, वो कहती हैं दैट यू कैन यूज अ ड्रग कॉल्ड ग्लाइबेनक्लामाइड. इंडिया में उसका नाम है डैनिल, और कुछ एक कंट्रीज में अवेलेबल भी है कॉम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन, जैसे डॉक्टर नूर आगा कह रहे हैं, ग्लूकोवांस. दिस इज यूज्ड, बट देयर इज अ ग्रेट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया both for the mother and for the baby with glibenclamide. So usually we don't use it. It would be safer to shift the patient to insulin. But again, like we said, हमेशा तो insulin नहीं दी जा सकती. There may be an issue of cost. There may be an issue of teaching. Like, how do we teach the patient to take insulin? Yeah, patient may have lot of money. Patient may say, I am willing to buy, but मुझे दवाई ही नहीं मिल रही. There's a shortage. Like in India also, during the first few weeks or months of COVID, many medicines went short. Now, I'm just trying to find Dr. Noor Aga's brand name, जो उन्होंने कहा है. This is a combination drug, and it contains glibenclamide, glyburide. So, Dr. Noor, if you wish to use this molecule, other people have used it, but you have to be extremely careful about hypoglycemia. If the mother is doing well and if the baby is growing properly on ultrasound, then we can continue. But if you feel that there is IUGR, baby is not growing properly, or there is hydramnios, too much of water around the baby,
और देयर इज मैक्रोसोमिया, बेबी का साइज बहुत बड़ा है अल्ट्रासाउंड पे, then it would be a good idea to shift to insulin. In insulin, many drugs are available, and Dr. Sanjeev Puri rightly points out that detamir insulin is the drug of choice. It is the safest in pregnancy. We can use other insulins also. Glargine can be used. So, अब अगर इंसुलिन की बात करें तो how do you classify insulins? You classify them according to duration of action. Basal, bolus, basal bolus, premixed. तो इंसुलिन रेजिमेंट्स की बात करते हैं. If the fasting glucose is high, but postprandial is not all that high, then we will give a basal insulin. We can give detamir or we can give glargine. Supposing fasting and postprandial both are high, then you have to cover for both. So then you will give a basal insulin like detamir or glargine, and you will give a rapid acting insulin like regular insulin or aspart or lispro. All these insulins can be used. Whatever is available, whatever is affordable, you can use them. But analog insulins, they have an edge in pregnancy because they cause less hypoglycemia, तो इतनी टेंशन नहीं रहती हमें. But now you will say 4 injections per day my patient is not able to take. So in India there are so many studies which say that you can use premixed insulin. You can use a 30-70 or a 25-75 insulin twice a day. And if this is able to control glucose levels, that's great. But variation काफी होती है. Every patient is different. There will be some patients who will be well controlled on medical nutrition therapy. Others who will need 10 to 15 units of insulin only. Yet others who will manage on metformin. And then there will be some, matlab, at any point of time, I have 1 or 2 patients like that who require 100 units per day. तो अलग-अलग तरह के मरीज होते हैं. तो according to the patient's glucose levels and according to the needs we start. ये भी देखना होता है कि अगर डायबिटीज बहुत जल्दी डायग्नोज हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायबिटीज वाज डायग्नोज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर, तो अब 5-6-7 महीने आप मेटफॉर्मिन पे नहीं निकाल पाओगे. गुड आइडिया टू स्टार्ट इंसुलिन. अगर सिवियर डायबिटीज हो, सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया, देन अगेन इंसुलिन. But supposing diabetes is diagnosed towards the very end, maybe 8th month, 9th month, levels are not very high, then and the baby is doing well, then you can try metformin as well. So not a major issue. So this is about management or sorting out. Now, other issues are also there. That is about supervision. So who supervises a diabetic pregnancy? अब ज्यादातर इट इज द गायनेकोलॉजिस्ट हु विल मैनेज प्रेगनेंसी. एंड हमारे कलीग्स जो हैं गायनेकोलॉजी में, डॉक्टर संजीव पुरी हैं दसुआ से, होशियारपुर से, ही विल आल्सो एग्री दैट इट इज द लेडी डॉक्टर्स who shoulder more than their fair burden of managing sick patients. So they are able to handle all the complications of pregnancy. When it comes to diabetes, however, you need teamwork. So you do need a physician along with you. And it would be a good idea if you have a dietitian as well. But अब हर जगह available नहीं होता, so our obstetricians, our gynecologists should empower themselves to manage diabetes. We've had a message from Dr. Dina that she is trying to log in but is not able to. There's some internet issue there in Kathmandu. So we'll certainly get madam again next time with us. तो ये हमने आज बात की about diabetes and pregnancy. First, we spoke about the fact that pregnancy is an opportunity for health. ये एक opportunity है जहाँ पे हम अच्छा transgenerational कर्म कर सकते हैं. We can actually improve the health of the mother and the baby by focusing on the ABCDE. And Dr. N.S. Sharda sir is also with us. Thank you, sir, for joining us. A for anemia, B for blood pressure, C for circumference of the abdomen or abdominal girth or weight gain, D for diabetes, and E for endocrine और thyroid. अगर हम ये ABCDE को ठीक कर देते हैं तो मदर की भी सेहत और बच्चे की भी बेटर होती है. फोकस हमने किया D for diabetes, and we've said that we must suspect diabetes in every lady of Indian origin. We must screen for diabetes. You can do whatever you want, चाहे वो 2 घंटे वाला GTT करें या 1 घंटे वाला, चाहे फास्टिंग या नॉन फास्टिंग.
But then you substantiate the diagnosis. And once you've done that, you sort it out. While sorting out, don't forget that you have to supervise properly. You can do HbA1c every month in pregnancy if you want, because the focus is on tight glucose control. Use the best insulins that are available. Speak with your doctor about analog insulin. Do the best monitoring. Speak with your doctor about personalized glucose monitoring और about CGM, continuous glucose monitoring, ताकि बिल्कुल बढ़िया सा कंट्रोल रहे और बढ़िया सा बेबी आए। अब जब डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद भी स्टोरी खत्म नहीं होती। उसके बाद भी मदर का ख्याल रखना होता है, बच्चे का भी, बिकॉज़ द चाइल्ड माइट गेट हाइपोग्लाइसीमिया इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो वो भी बच्चे का ख्याल रखना होता है। वी हैव टू फीड द बेबी एज़ सून एज़ पॉसिबल। सेकेंडली, मदर को भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा, शुगर्स लो हो जाएंगी, सो वी हैव टू रिड्यूस द डोजेस सडनली, व्हाटएवर वी वर गिविंग, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन। एंड थर्ड, वी हैव टू एनकरेज द लेडी टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। अगर आप बेबी को फीड करते हैं, दैट इज द बेस्ट फूड और द बेस्ट सर्विस यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर सेल्फ। क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको आगे जाके डायबिटीज होने का और ओबेसिटी होने का चांस कम है। और जो बेबी फीड लेते हैं, उनका चांस कम है कि उनको आगे जाके डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। So with this, I'd like to thank everyone for having been with us today. And do remember that diabetes in pregnancy is an emergency. And do spare time to speak with your friends, your loved ones, your colleagues about the importance of managing pregnancy in general and about preventing diabetes and its complications in pregnancy. I look forward to being with you again. And Dr. Deena हमारे साथ नहीं थी आज, but दोबारा उनको बुलाएंगे हम certainly कभी ना कभी. Eyes should be checked, ideally, Dr. Rajdeep, even before pregnancy in everyone who is known to be diabetic. But क्योंकि GDM आती pregnancy में है, तो at least once an eye checkup should be done. जो डॉक्टर नितिन कपूर की डायबिटीज वाली बुक का लेटेस्ट एडिशन, आई थिंक इट शुड बी आउट इन अ मंथ और टू। मैं डॉक्टर संजीव नेक्स्ट प्रोग्राम में सर्टेनली आपको बताऊंगा इसके बारे में। आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। जैसा कि आप जानते हैं, केके में टॉक्स तो रोज होता है 7 से 8 बजे, और मैं आपके साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार। हमेशा हम एक अलग टॉपिक लेके चलते हैं, कभी कुछ। और अब मैं आपको मिलूंगा 28 तारीख को, और हमारी जो गेस्ट हैं वो है मिस नीरज सत्संगी। मिस नीरज सत्संगी हैं डायबिटीज एजुकेटर एंड डायबिटीज नर्स फ्रॉम इंदौर, और मैडम हमारे साथ बात करेंगी डायबिटीज एजुकेशन की। दिस विल बी ऑन द 28th ऑन द थर्सडे। डॉक्टर वेदांत पूछते हैं, इफ वी मिस जीटीटी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट डू द जीटीटी इन द अर्ली पार्ट ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, सो नो इश्यूज एंड डोंट वरी टू मच अबाउट इट। And I like to thank everyone. All of you are great. आप सबकी वजह से तो हम हैं. So thanks everybody. Thank you for joining in all the way from Kabul, all the way from Chennai, from across the country, across the world. Thank you and Jai Hind.